Hello students, I am teaching you chemistry paper 3, that is the analytical chemistry of SIBSE of semester 4, and this is our part 5 lecture of unit 2nd, that is the instrumental methods 2nd. In last lecture we have completed the potentiometric titration, the working of potentiometric, construction of potentiometric titration, then advantage and disadvantage of potentiometric titrations. Now we have to study a new topic, that is the pH metric. So what is the pH metric? How it is constructed? How it is working? And what is the advantage and disadvantage of pH metric? Now all these things we have to study in this lecture. So what is the principle of pH metric? So pH value of a solution expresses the degree of its acidity or alkalinity and is defined by the expression pH is equal to minus log of H plus. सो पीएच मेट्रिक क्या होता है? द एक्सप्रेस ये क्या करता है? एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी, एसिडिटी और अल्कलिनिटी, एंड ये इसका एक्सप्रेशन क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस. So pH of solution is determined using a cell consisting of glass and saturated calomel electrodes. So pH of solution determine करते हैं हम using a cell consisting of glass and calomel electrode. So this is the representation of this. First one is glass, then test solution H plus ions, then this is the salt bridge, and this is the Fce minus, that is saturated calomel electrode. So determination of pH using a combined glass electrode. So how the pH is determined from a combined glass electrode? The potentiometric method is the most accurate method to determine the pH of the solution. So potentiometric method, most accurate method to determine pH of the solution. For finding the pH of a solution, an electrode reversible to H plus ions has to be used as the indicator electrode. So for finding the pH of solution, electrode reversible to H plus ions has to be used. सो जैसे जिस H प्लस आयंस कम ज्यादा हो गए उसके हिसाब से हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग पीएच ऑफ दैट solution. So that example for this is quinhydron electrode or a glass electrode. The glass electrode is the most commonly used indicator electrode combined with saturated calomel electrode as a reference electrode. So glass electrode most commonly use किया जाता है quinhydron या glass electrode में, और वो क्या है? कंबाइंड विद सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड. When the glass electrode is dipped in the solution whose pH has to be determined, it is a test solution. A potential is established between the glass and the solution. So जब हम ग्लास इलेक्ट्रोड को डीप करेंगे सॉल्यूशन में जिसका पीएच हमें वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज टेस्ट सॉल्यूशन. द पोटेंशियल एस्टेब्लिश होगा वो ग्लास में and the solution में. The value of the potential developed is a function of H plus concentration of the test solution and the nature of the glass electrode. तो जो वैल्यू पोटेंशियल डेवलप होगा H plus concentration of test solution and the nature of the glass, ग्लास के नेचर पे भी उसका H plus आयंस या तो पोटेंशियल डेवलप होगा वो डिपेंड करता है. The potential difference is given by the equation, that is the Eg is equal to Eg0 minus 0.05916 log of H plus. So this is the equation first. So Eg is equal to Eg0 minus 0.05916 pH. pH is equal to minus log of H plus. So that is why we are writing second equation is in place of log of H plus we are writing pH, where Eg EMF of the electrode. So Eg is the EMF of the electrode and Eg0 is the constant for the given glass electrode. So Eg0 is the constant and Eg is EMF of the glass electrode. The glass and saturated calomel electrodes are dipped in a test solution. The glass and saturated calomel electrode हम dip करेंगे in a test solution and the EMF of the cell is determined using a potentiometer, and then we are using pH of the EMF of the cell using potentiometer. The cell is represented by
AgCl 0.1 normal HCl, glass membrane, then test solution, then saturated KCl, then Hg2Cl2Hg. So Ag, this is the representation for cell, that is a silver chloride, 0.1 normal hydrochloric acid, then glass membrane, test solution, then this one is the then saturated KCl solution, Hg2Cl2. This is the representation of determination of the cell, represent how the cell represent, and its EMF is given by the equation E cell is equal to Eg minus ESC. So Eg 0 plus 0.05916 pH minus ESC. So ESC is 0.242. So this equation from we have we have write from the equation 1 and 2. So E cell is equal to Eg0 plus 0.5916 pH minus 0.242. So here we have putting this 0.242. So pH is equal to E cell minus Eg0 plus 0.242 divided by 0.05916. So by solving this equation, we have write this pH is equal to E cell minus Eg0 plus 2.242 divided by 0.05916. The glass electrode is combined with the calomel electrode and the EMF of the cell setup is measured. So glass electrode combine करेंगे calomel electrode के साथ and EMF of the cell is measured. If the values of E cell and Eg are known, अगर हमें E cell और Eg, E cell and Eg, मतलब हमने यहाँ पर अगर E cell, ये E cell and this one Eg, इनकी values अगर we have to already known, then the pH of the test solution we can easily determine. So by using this equation, we can easily determine the pH of the solution. So limitations. So what are the limitations of this? The glass electrode has to be standardized with a buffer solution before use. हर टाइम हमें यूज करते वक्त स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है विद बफर सॉल्यूशन से ग्लास इलेक्ट्रोड को. The buffer solutions of pH 4 and pH 9.2 are used for standardization. So कितना pH होना चाहिए 4 and 9.2. Eg0 does not remain constant but changes with time and may differ from electrode to electrode. Hence the need of standardize it. So Eg0 क्या है? Does not remain constant. ये क्या होता है? चेंजेस होता है that in time to time and differ by from इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड. अगर अलग अलग इलेक्ट्रोड हुआ तो अलग अलग उसका Eg0 होता है. तो दैट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज इट. तो स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है हर टाइम. When the hydrogen ion concentration on the two sides of the glass membrane are equal, the electrode should not develop any potential. So not develop any potential. अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड से ग्लास मेम्ब्रेन के इक्वल हुआ, अगर इक्वल रहा, तो इलेक्ट्रोड क्या होगा? इलेक्ट्रोड शुड नॉट डेवलप इन पोटेंशियल. कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा दोनों साइड से सेम होने की वजह से. इन एक्चुअल प्रैक्टिस एवरी ग्लास इलेक्ट्रोड शोज अ स्मॉल पोटेंशियल नोन एज असिमेट्री पोटेंशियल. बट एक्चुअली क्या है? एवरी इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्मॉल पोटेंशियल होता है उसमें. सो उसे हम कहते हैं असिमेट्री पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. And next one is the electrode response is perfect in the pH range of 1 to 9. So 1 to 9 pH range में उसका response perfect होता है. And above pH 9 the response of the electrode is deteriorates. Deteriorates with increasing the pH value. मतलब वो कुछ उसमें disturbance आ जाएगा, मतलब वो कोई उसमें खराबी आ जाएगी. That is the increase in pH value. As the hydrogen ion concentration decreases with increase in pH of the solution.
So hydrogen ion concentration decrease होता है with increase in pH of the solution. The electrode being a selective start responding to univalent ions like Na+. जैसे जैसे H+ आयन का concentration कम होता जाता है तो pH इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, सिलेक्टिव हो जाता है, मतलब उसको H+ नहीं मिल रहे तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्डिंग टू यूनिवेलेंट आयंस जो भी होंगे उसके लिए लाइक Na+, अगर उसमें Na+ वगैरह ये यूनिवेलेंट आयंस रहे तो उनके साथ रिस्पॉन्ड करने को स्टार्ट हो जाता है. Hence with pH greater than 9 the measured pH does not correspond to the actual value but is less. This is known as alkaline error. So क्या हो जाता है फिर, मेजर पीएच एक्चुअल वैल्यू और मेजर पीएच में लेस हो जाती है, मतलब डिफरेंस आ जाता है, और ये इसी को क्या कहते हैं हम, दैट इज द अल्कलाइन एरर ऑफ द इलेक्ट्रोड. सिमिलरली विथ एक्सेस सॉल्ट concentration the electrode will start responding to univalent ions and will not give the correct pH of the solution. This is known as salt error or the electrode. So वैसे ही क्या होता है, जब excess salt concentration हो जाता है the electrode start responding to univalent ions and will not give a correct pH of the solution. और इसे क्या कहते हैं हम, salt error. मतलब salt excess रहा तो क्या होता है, रिस्पॉन्स गलत आता है, तो that is we are calling as a salt error. These are the limitations. So instrumentation of pH meter. So the glass electrode has a high resistance and hence an electronic instrument called pH meter is generally used for the determining the pH of solution. So glass electrode क्या होता है, high resistance होता है, और that is why electronic instrument called pH meter and generally used for determination of pH of solution. There are two types of pH meters. First one is the potentiometer type. In this instrument, the glass electrode is incorporated in potentiometric circuit and the off-balance current are amplified electronically so that a milliammeter has to be used to detect the balance point. So ये इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड इनकॉर्पोरेट मतलब करता है पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट से. सो क्या होता है, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस करंट, मतलब जो करंट यूज नहीं होता, ऑफ बैलेंस करंट आर एम्पलीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली, सो दैट मिली एमीटर हैज टू बी यूज टू डिटेक्ट द बैलेंस पॉइंट. सो हम इसके वजह से क्या करते हैं, मिली एमीटर को यूज करते हैं. मिली एमीटर क्या करता है, डिटेक्ट द बैलेंस पॉइंट, मतलब वो मिली एमीटर, मतलब जो छोटा छोटा भी करंट रहा तो भी वो मिली एमीटर में डिटेक्ट होता है, सो वो वहां पर बैलेंस हो जाता है. द इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर does acts as a null point indicator. तो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का एक्ट करेगा null point indicator. That is the potentiometric type. Second one is the direct reading type. A linear relationship is established between the EMF of the cell and the pH so that the pH can be directly read on the analog or digital scale. So linear relationship establish होता है between EMF and pH में, so that pH can directly read to the analog or digital scale. मतलब एनालॉग में इजीली वो रीड होता है because of linear relationship between EMF and pH. So these are the types. Now the applications in titrometry. For pH metric titration of strong acid HCl versus strong base NaOH. So application we have to study now. Application of titrometry. So the neutralization of strong acid HCl by strong base NaOH can be studied by a pH metric titration. So neutralization of strong acid and strong base by pH metric titration using a combined glass calomel electrode system. The equivalent point of the titration is determined graphically. So equivalence point क्या हम determine करेंगे titration का graphically by the equivalence point of the titration determined graphically. The pH metric titration curves are similar to potentiometric titration curve. So pH metric titration curve कैसे होते हैं, similar to potentiometric titration. जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व देखे थे, एज लाइक द
same the pH metric titration curves are same. So above table gives the data for pH metric titration curve for HCl versus NaOH titrations. So this one is the volume of 0.1 molar NaOH added in ml. So this one is 0, 25, 40 up to the 60. Here is up to the 60. We have adding. Then the E cell is measured. So E cell is measured for difference for. So here up to the this 50, it is the positive, that is 42, 43, and then it is negative, means decreases, and pH is constantly increases. So this one is the observation of pH metric titration of strong acid HCl versus strong base NaOH. So these are the diagram graphs of the pH metric titration as like a potentiometric titration. The first graph is same like as a potentiometric titration, that is the pH versus volume of titrant added. Then second graph also like dpH by dV versus volume of titrant added NaOH. So dpH by dV versus volume of titrant added NaOH. So this is the graph is like a potentiometric titration. Then the third graph is the d square pH by dV square versus volume of titrant added. So this is the d square pH by dV square versus volume of titrant added. So इसका ग्राफ कैसे आता है? Highest point of positive and the highest point of negative as like a potentiometric titration. So we have joined these two and we get a V equivalence of this graph. So these are the three graphs as like a potentiometric titration for pH metric titration. So applications in biological and environmental analysis. So what are the applications in biological and environmental analysis? मतलब biological और environmental के हिसाब से इसके applications क्या है? So first one is the pH measurement of blood. So blood का pH measurement करने के लिए, that is the pH of blood is closely related to the actual physiological condition of living beings. Hence, accurate measurement of blood pH is essential to monitor physiological conditions of living beings. So blood pH is measured at 37 degrees Celsius and the blood sample should not be exposed to the atmosphere. So pH of the blood क्या है? Related to the physiological conditions of living thing. मतलब जो भी living things है हमें उनकी physiological conditions देखने के लिए वो अच्छे से physiological conditions है क्या नहीं living things की. So इसके लिए हम क्या यूज करते pH उसका फाइंड आउट करते blood का. So blood pH is measured at 37 degrees Celsius and blood sample should not be exposed to the atmosphere. मतलब atmosphere में expose नहीं करना है हमको for pH measurement and it up to the 37 degrees Celsius. Then second one is the pH affects several chemical and biological process in water. So क्या होता है बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होते हैं वाटर्स में, वो उसमें भी की वजह से भी पीएच उसका डिफरेंस आता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश इन स्पेसिफिक पीएच रेंजेस. मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइव रहते हैं जब तक उनका स्पेसिफिक पीएच रेंज होगी. तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म प्रेफर पीएच रेंज 6.5 to 8 फॉर अ ग्रोथ. सो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं? 6.5 to 8 में पीएच रेंज में ही ग्रोथ होते हैं. बियॉन्ड दिस पीएच रेंज द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स of organisms are affected and reproduction is reduced. एंड बियॉन्ड मतलब इसके आगे अगर पीएच रेंज पीएच गया तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करती है? अफेक्ट करती है, यानी उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम भी से वो रिप्रोडक्शन उनका रिड्यूस हो जाता है. एट द लो पीएच टॉक्सिक मेटल्स and their compounds are taken up by the aquatic plants and organism. So low pH में toxic metals and their compounds are taken up by aquatic plants and organism. मतलब अगर low pH रहा solutions का तो toxic metals जो भी होते हैं and their compounds जो भी होते हैं वो क्या है? aquatic plants वो ऑब्जर्व कर देते हैं. मतलब वो लो पीएच की वजह से उनको टॉक्सिक मेटल्स वो एब्जॉर्ब कर देते हैं एंड द डेथ ऑफ दैट aquatic plants due to this. Third one is the pH metric titration can be done for all types of acid base titrations.
including mixture of acids. So all types के acid base titration, that is the dissociation constant K of a weak acid like acetic acid can be accurately determined by pH metric titration. So dissociation constant of weak acid जैसे कि एसिटिक एसिड हम कैसे एक्यूरेटली डिटरमाइन बाय पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन से pH measurement are useful for titration of colored and turbid solution. तो pH measurement किसके लिए और यूज होता है? टाइट्रेशन ऑफ कलर्ड एंड टर्बिड सॉल्यूशंस के लिए, टाइट्रेशन के लिए. And fourth one is the monitoring of safe water pH conditions. So the ideal pH range for safe water is pH is greater than 6 and pH is less than 8. So greater than 6 and less than 8, that is the 6 to 8 is the ideal range for safe water pH range. A rise or fall in the normal pH of water indicates chemical pollution. अगर उनमें अगर राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फॉल हो रहा है, तो वो नॉर्मल पीएच से कम ज्यादा हो सकता है, दैट इज द केमिकल पोल्यूशन. So we are calling it as a chemical pollution. So pure rain has a pH around 5.6, that is slightly acidic due to presence of carbon dioxide. So जो pure rain होती है अपनी, उसकी कितनी होती है? pH is 5.6. So वो slightly acidic होता है because of less than 7. So due to presence of carbon dioxide, वो किसकी वजह से होता है? Due to presence of carbon dioxide की in the atmosphere which dissolve in water to produce carbonic acid. So कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है वो डिजोल्व होता है वाटर में और प्रोड्यूस करता है क्या? कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3 व्हिच इज अ वीक एसिड. सो फोटोसिंथेसिस, respiration releases carbon dioxide into the atmosphere and lower the pH. सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये जो है ये क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, और क्या करते हैं? वो लोअर करते हैं पीएच को. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड and sulfur oxide into the atmosphere. So burning of fossil fuels, जो भी fossil fuels है जो रिलीज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड into atmosphere. So these gases combine with water to produce acid rain. So these all gases are combined with water and produce acid rain, and which has a pH is equal to 5.6. मतलब उसका pH range कितना होता है? 5.6. So fifth one is the estimation of metal ions in water. So metal ions can be estimated in a minute quantities in water by a complex geometric titration against Na2EDTA at a constant pH. So metal ions क्या है? Estimated in a minute quantities. Minute quantities में in water में होते हैं. So complex geometric titrations उनका करके हम Na2EDTA के साथ, so at constant pH, the indicator used to determine the end point of the titration function at a definite pH. और इंडिकेटर कुछ यूज करके हम उसको क्या करते हैं? डिटरमाइन उसका एंड पॉइंट करते हैं और उससे वी कैन फाइंड आउट द मेटल आयंस इन वाटर. सो बाय डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट वी कैन फाइंड आउट द मेटल आयंस at a definite pH. So example of this is the hardness of water can determined by titration with Na2EDTA. To estimate calcium 2 plus and magnesium 2 plus using Ereochrome black tea indicator at a pH is equal to 10. So hardness of water हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? टाइट्रेशन विथ Na2EDTA. उससे क्या करते हैं? हम टाइट्रेशन करते हैं Na2EDTA के साथ. Then we estimate the calcium 2 plus and magnesium 2 plus, and by using Ereochrome black tea indicator, and pH is 10. A buffer solution is added to maintain a pH is equal to 10 during the course of titration. So calcium 2 plus and Mg2 plus we are estimating by titrating the solution hard water with Na2EDTA and by Ereochrome black tea indicator, and by maintaining pH is 10. So pH 10 कैसे maintain करते हैं? By adding buffer solution during the course of titration. So sixth one is the enzyme, which are complex proteins synthesized by living organism, catalyze chemical reaction at a particular pH. मतलब कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से
वो कैटालाइज केमिकल रिएक्शन क्यों क्यों पर्टिकुलर पीएच में ही होती है एंड एट लो टेम्परेचर प्रेफरेबली बिलो 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको टेम्परेचर भी बिलो 50 डिग्री सेल्सियस ही लगते हैं एंड कुछ पीएच उसका डेफिनेट पर्टिकुलर पीएच ही लगते हैं, तभी वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, एंजाइम्स जो भी है। And seventh one is the pH of soil is determined by a portable pH meter to estimate the soil acidity. So pH of soil हम determine कर सकते हैं by a portable pH meter to estimate the soil acidity. Portable pH meter से हम soil का acidity find out करते हैं, pH find करते हैं. So these all are the pH metric, and we have completed the all the things of pH metric. Thank you students.